हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सर्कल्स चैप्टर से ये क्वेश्चन, जिसमें कि दो सर्कल्स हैं, रेडियस ए और बी वाले, और तीसरा सर्कल है जो इन दोनों को टच कर रहा है और इनके कॉमन टेंजेंट को भी टच कर रहा है एज शोन। इसका रेडियस क्या होगा क्वेश्चन ने पूछा है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कीजिए क्वेश्चन को एंड देन यू कैन सी द सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हम इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर देते हैं, जिससे कि ये रेडियस ए और रेडियस बी का सम हो जाएगा ये डिस्टेंस। सेकेंडली, इन सेंटर से हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर देते हैं टेंजेंट के ऊपर। थर्डली, हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, सो दैट ये एक ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बन जाता है। नाउ हम देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस ए होगा और ये डिस्टेंस बी होगा, बीइंग द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स। तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के डिफरेंस से आएगा, दिस डिस्टेंस विल बी ए माइनस बी। सेकेंडली, ये जो डिस्टेंस है दिस इज ए प्लस बी. This whole distance will be a plus b, and therefore now we can apply Pythagoras theorem on this right triangle, and we can say that a plus b whole square is equal to a minus b whole square plus d square. Now d is this horizontal distance, so we can calculate this d by taking the difference of a plus b whole square and a minus b whole square. So the value of d square comes out as 4ab, and therefore the value of d is 2 root AB. So this D is the distance horizontally between the two centers. Now you can use this result now, which we can mark it as 1, and use the same result for other circles. हम लोग इस थर्ड सर्कल के रेडियस को नाम दे देते हैं C. तो distance between first and second circles centers will be 2 root AC, and the distance between second and third circles will be 2 root BC by the same logic as this, क्योंकि इसी तरह का राइट ट्रायंगल हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो नेट रिजल्ट हमारे पास का आएगा कि ये जो टोटल डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द टू डिस्टेंसेस, सो वी कैन से 2 रूट ए बी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ above two distances. The next step हम लोग लिख सकते हैं that 2 root AB is equal to 2 root AC plus 2 root BC. Dividing throughout first of all by 2 and then by root of ABC, you will get 1 by root C equals 1 by root B plus 1 by root A. So this is the result which gets you the radius of the third circle. तो इस result से हमको third circle का radius मिल सकता है. Thanks for watching.